Good morning, students. Welcome back in our maths class. How are you all? Fine. All are fine? Very good. Class 5th, subject mathematics. Our chapter 3 is going on. Name of the chapter is Operations on Large Numbers. And this is our lecture number 6. Today's subtopics are Properties of Division, Exercise 3C, question number 2, A, G and I parts we will do, and revision of tables of 15 and 16. Now let's start properties of division. First property, if we divide a number by 1, the quotient is the number itself. Means अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट खुद वही नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 542 डिवाइड बाय 1. When 542 is divided by 1, our quotient will be 542. Second property, if we divide a number by number itself, the quotient is 1. अगर हम नंबर को उसी नंबर से ही खुद से ही डिवाइड कर देते हैं then quotient is 1. For example, 275 divided by 275. 275 को 275 से डिवाइड कर रहे हैं then our quotient will be 1. Third property, division of a number by 0 is meaningless. किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 35 डिवाइड बाय 0, नो मीनिंग. 35 को 0 से डिवाइड करेंगे देन इट हैज नो मीनिंग. सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल 65 डिवाइड बाय 0, नो मीनिंग, राइट. 0 divided by, fourth property is there, 0 divided by any number gives 0 as a quotient. 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 0 आता है. 0 डिवाइड 42 is equal to 0. 0 divide 5 is equal to 0. 0 divide 9 is equal to 0. So whatever number we are writing as a denominator, if numerator is 0, then quotient will become 0. Now after the properties, we will start our exercise. Exercise 3C, question number 2. Find the quotient and remainder and check your answer. Means question is given to us, we have to find out the quotient and remainder. Means division will be done first and then check your answer. After division, we will check our answer. The parts which we are going to do, these are A, G and I parts. Let's start with first, that is A part. 68,345 divided by 35. So our dividend is 68,345 and divisor is 35. Now 35 once tens two two digits are there. So we will take here 2 digits 68. 68 35 से बड़ा है, so we can do division. 35 2s are 70. 68 से बड़ा हो जाएगा, so we have taken 35 1s are 35. Now 8 minus 5 3, 6 minus 3 3, 33. Now take the next number 3. Now the number will become here 333. Now in rough column we can check. रफली हम आइडिया लगा सकते हैं बेटा 35 10 350, जो 333 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम 9 पे चेक करके देखते हैं रफ कॉलम में. 35 9 वी हैव डन, इट इज 315. सो 35 9 315 विल बी टेकन बिलो 333. नाउ सब्ट्रैक्शन 3 is there, so take borrow from here. 13 minus 5 8, 2 minus 1 1. 3 minus 3, 0. So 18 is there. Take the next number, that is 4. 35 and here 184. So again in rough column we will check. 35 5s are 175.
35 6 आप करेंगे तो 184 से बड़ा आ रहा है, तो 5 हम ले लेंगे 35 5 175. Now subtraction, 4 is here, so 14 minus 5 9, 7 minus 7 0, 1 minus 1 0. So 9 is there, take 5, now it is 95, 35 2s are 70. Now subtract 5 minus 0 5, 9 minus 7 2. So our quotient is 1952, remainder is 25, dividend is 68,345 and divisor is 35. Now we will do checking. For checking we have done this formula. In very first lecture we have revised this formula. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. So divisor 35 multiply quotient 1952 plus remainder is 25. Remainder is 25. So 1952 को आप 35 से पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. I have shown this multiplication here in rough column. 5 2s are 10, 0, 1 carry, 5 5s are 25, plus 1 26, 2 carry, 5 9s are 45, plus 2 47, 7, 4 carry, 5 1s are 5, plus 4 9. Then 3 will be multiplied. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5, 1 carry, 3 9s are 18, 3 9s are 27, 27 plus 1 28, 8, 2 carry, 3 1s are 3 plus 2 5. So now addition 0, 6 plus 6, 12, 2, 1 carry, 7 plus 5, 12 plus 1, 13, 1 carry, 9 plus 8, 17 plus 1, 18, 8, 1 carry, 5 plus 1, 6. So now multiplication is 68,320. अब divisor multiply quotient we have done. Now remainder we will add. So again in rough column we will do addition of remainder, that is 25. After adding we got our answer 68,345 and this was our dividend. So it's same, dividend is equal to the number, both the sides are equal, so it's verified. Now let's start our next part, G part. 40,135 divided by 450. So our divisor is 450 and dividend is 40,135. Division किया, in rough column we will check again. 450 tens are 4,500. रफली आप आइडिया लगा लीजिए, 45 100 आ रहा है और यहाँ 40 है, 4013 और वहां आ रहा है 4500 टेंसा करने पे. इट मीन्स हमें 8 और 9 पे रफ कॉलम में चेक करना है. सो वी हैव चेक्ड हियर 9 फर्स्ट 4050, ये इससे बड़ा है नंबर, है ना. सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ना 450 401, तीन नंबर्स हमने यहाँ चेक किए तो ये नंबर्स स्मॉल बन रहे थे 450 से, सो वी हैव टेकन 4. नाउ इट इज 4013 और 9 करेंगे देन दिस नंबर इज बिगर. So we have checked for 8s. 458 is 3,600. So we have taken 8s 3,600. Now subtract. After subtracting we have got 413. Now take the next number, that is 5. Now our number has become 4,135 and now 9s we will take 4,050, 5 minus 0 5, 13 minus 5 8, 0 minus 0 0, 4 minus 4 0. So our quotient is 89, remainder is 85 and this is dividend and this is divisor. Now we will do checking formula. We will apply that checking formula for checking our answer. So let's do checking. Write down the formula first. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. Divisor multiply quotient 450 multiply by 89. 450, if we are multiplying 89 with 45, we will get our answer here 4005 as it is shown in rough column. First of all 5 से आप multiply करेंगे 89 को 445, then with 4 you will multiply 356, then addition 5
then 4 and 6, 4 plus 6, 10, 0, 1, 4 plus 5, 9 plus 1, 10, 0, 1, carry here 3 plus 1, 4, so 4005. अब ये 0 एक हमने यहाँ पे छोड़ा था, this 0 will be taken here, right? So multiplication has become 40,050 plus remainder. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं रिमाइंडर विल बी रिटर्न एज सच. रिमाइंडर को वहां से हटाना नहीं है, रिमाइंडर आपके साथ लिखा रहेगा. एंड व्हेन यू विल कंप्लीट योर मल्टीप्लिकेशन देन यू विल डू एडिशन ऑफ दिस रिमाइंडर एज इट इज डन हियर इन रफ कॉलम. 0 plus 5, 5, 5 plus 8, 13, 3, 1, 1 plus 0, 1, 0 and 4. So it is 40,135 and it is our dividend, right? If you are not getting correct answer, it means you have to check your division, you have to check this multiplication, and then you have to check the addition part, right? Now I part. 83,256 divided by 4,056. So write down here 83,256. We will divide with the number 4056. So in rough column we have multiplied 4056 multiplied by 2. So we got our answer 8,112. लिख सकते हैं ना हम इसके नीचे 8,325 के नीचे लिख सकते हैं, है ना? सो इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट. अगर ये इससे बड़ा नंबर होता हम 3 सा ले लेते तो वो 8,325 से बड़ा हो जाता, है ना? और अगर हम इससे छोटा लेते 1 सा ले लेते तो फिर हमारे यहाँ सब्ट्रैक्शन करके नंबर बिगर हो जाता. सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर ये नंबर हमारा डिवाइजर से बड़ा है, इट मीन्स वी हैव टेकन रॉन्ग नंबर इन क्वेश्चन, wrong digit in question, right? So 4056 multiplied by 2, you got our answer 8,112. Now subtract 5 minus 2, 3, 2 minus 1, 1, 3 minus 1, 2, 8 minus 8, 0. Take the next number, that is 6. Now next digit we have taken 6. Now it is 2,136. 2,136 हमारे डिवाइजर से छोटा है, सो वी हैव टेकन इट जीरो सा. डिवाइजर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर आंसर विल बिकम 0. सो वी विल राइट डाउन हियर 0 0 0 0. 6 minus 0 6, 3 minus 0 3, 1 minus 0 1, 2 minus 0 2. So our quotient is 20 and remainder is 2,136. Now checking. Again write down the formula. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. 4,056 multiply by 20. Again हमने simply 2 से multiply कर दिया और फिर इस 0 को यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के साथ राइट साइड में अप्लाई कर दिया. So after multiplication we got 81,120 plus remainder. Remainder is 2,136. अगेन रफ कॉलम में हमने ऐड करके दिखाया 0 plus 6 6, 2 plus 3 5, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 8 is if 0 is there, no number is there, then we will take 0. 8 plus 0 8. So our answer has become 83,256, which is our dividend, right? And now we will revise table of 15. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 sixes are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135, 15 tens are 150. You have to revise by speaking it with me. Louder bolna hai, right? Now we will revise table of 16. 16 ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80, 16 sixes are 96, 16 sevens are 112, 16 eights are 128, 16 nines are 144, 16 tens are 160.
वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे देन यू हैव टू रिवाइज अगेन टेबल ऑफ 15 एंड 16. लाउडर बोलना है, मम्मी को पापा को सबको बताना है कि नाउ आई एम रिवाइजिंग टेबल्स. ओके, टेबल रिवाइज करेंगे देन योर कैलकुलेशन पार्ट विल बी ऑलवेज करेक्ट. नाउ इट्स टाइम टू टेक होमवर्क. Homework is solve question 2 B and C part of exercise 3C in practice notebook. 3C exercise के question 2 का B and C part आपको practice notebook में करना है. Here are the B and C part of your question number 2. Right? Now we will do homework discussion of lecture 5. लेक्चर 5 का जो हमारा होमवर्क था अब हम उसको डिस्कस करेंगे. राइट, हैव यू ओपन योर प्रैक्टिस नोटबुक्स? ओपन द नोटबुक्स एंड चेक. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, E and F parts were given of exercise 3C. First question, find the product E part. 14,239 multiply by 3,600. अब यहीं से आपको बेटा माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि 3,600 मीन्स हम अगर इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग, इन दैट प्रोडक्ट टू द राइट साइड वी विल राइट डाउन 2 more zeros. राइट, इफ यू हैव डन लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन दैट इज ओके, बट आप इसकी प्रैक्टिस करिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सीनियर क्लासेस. सो हियर व्हाट आई हैव डन, 14,239 multiply 36 multiply 100. 36 into 100 3,600 ही होता है ना, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. नाउ 14,239 multiply by 6 we have done first. Okay, we got 85,434. Then we have multiplied it with 3. Right? कैसे मल्टीप्लाई करना है आई एक्सप्लेन मैनी टाइम्स इन द लेक्चर. सो नाउ you have to correct, check your answer. If it is correct it's okay, if no then you will do correction work. After multiplication with 6 and then multiplication with 3 you will do addition. 4, 3 plus 7 10 0 1, 4 plus 1 5 plus 1 6, 5 plus 7 12 2 1 carry, 8 plus 2 10 plus 1 11 1 1 carry, 1 plus 4 5. So this is the product of 14,239 into 36. इस प्रोडक्ट के राइट साइड में आपको 2 zeros और लगानी है. Got it? So this is our answer. 5 crore 12 lakh 60,400. Here is your F part. 1,356 multiply by 745. Simply first of all you will multiply 1,356 with 5. Okay, as I explained in the previous lecture multiplication, and today also I explained you, when you are multiplying with 5 you got your answer 6,780. Then multiply this number with 4, 5,424. Now multiply this with 7, 9,492, and now addition will be there, and after adding your answer is 10,10,220. Is it correct in your notebooks? Very good.